Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, today I, your English teacher Rajni, will explain you lesson 1, the bird's eye. अच्छा बच्चों, मुझे बताइए कि अगर सपोज आपको कोई काम दिया गया है करने के लिए, तो आपकी जो सक्सेस या फेलियर है किस पर डिपेंड करती है? आपको पता है? हमारी सक्सेस और सक्सेस ना मिलना दोनों ही हमारे कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है। तो आइए इस लेसन को अभी हम रीड करेंगे। बर्ड्स आई ये किसके बारे में है, राइट? नाउ अ पीक बिफोर यू रीड। This story is about a test of focus and skill given by Guru Dronacharya to his students, the Pandavas and Kauravas. Each prince is asked to shoot the eye of a bird, but only Arjuna, with his unwavering concentration, succeeds. The story highlights the importance of focus in achieving सक्सेस। तो अभी मैंने आपको पूछा था कि कैसे हमारी सक्सेस होती है और कैसे हम फेल हो जाते हैं किसी काम को करने में। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। तो यही सेम इस लेसन में दिया गया है। इस स्टोरी में जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो अपने जो शिष्य थे उनके कौरव और पांडवास, तो उन्होंने जो उनको पूरे लाइफ टाइम में जो उनको शिक्षा दी थी उसका टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, जो उनके जितने भी स्टूडेंट थे उनको बर्ड की आई को शूट करने के लिए कहा। सारे फेल हो गए थे, लेकिन अर्जुन अपने इस काम में, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन सिर्फ बर्ड की आई में था, तो वो सक्सीड हो गए थे। आइए इस स्टोरी को रीड करते हैं जो हाईलाइट करती है फोकस ऑन अचीविंग सक्सेस। नाउ रेडी टू रीड? In Mahabharata, the Pandavas were the 5 sons of Pandu and the Kauravas were the 100 sons of Dhritarashtra. The Kauravas and the Pandavas were cousins who later fought the great battle of Kurukshetra. जो पांडव और कौरव है वो क्या है? पांडव तो किसके सन है? पांडु के। और जो कौरवाज हैं वो 100 थे और धृतराष्ट्र के वो बेटे थे। तो ये दोनों आपस में कजन्स थे और किस तरीके से जो है बाद में इन्होंने कुरुक्षेत्र का बैटल भी फाइट किया था, ये इस सब के बारे में हमको इसमें पता चलता है। नाउ कैन यू नेम द 5 पांडवास एंड द 2 एल्डर कौरवास? पांडवास और कौरवों के नाम आपको बताने हैं। इन दिस स्टोरी द पांडवास एंड द कौरवास आर यंग। दे आर प्रैक्टिसिंग द स्पोर्ट ऑफ आर्चरी। डू यू नो व्हाट इज आर्चरी इज? आर्चरी क्या है? धनुर्विद्या, जिसमें हम बाण चलाते हैं धनुष से और अपना जो हमारा एम होता है उसको अचीव करते हैं। Long, long ago, when the Pandavas and Kauravas were young boys, they learnt archery from Guru Dronacharya. One day, the Acharya arranged a shooting demonstration as a test of his disciples' skill. Parents and visitors all gathered to see how the princes were learning the skill. अब पांडव और कौरव दोनों के ही गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। तो उन्होंने एक दिन शूटिंग डेमोन्स्ट्रेशन अरेंज किया अपने जो उनके डिसाइपल्स थे उनकी स्किल को टेस्ट करने के लिए। तो सारे पेरेंट्स और विजिटर्स भी वहां पर गैदर्ड थे। I wonder what the test will. I hope it will begin soon. Listen, princess, on the left branch of that tree, you can see a wooden bird. You have to stand on this line in front of you and shoot the eye of the bird with this bow and arrow. Are you ready? अब उन्होंने bow और arrow दिया और कहा कि जो wooden bird है उसकी eye को शूट करना है। Yes, Guruji, we are ready. Good. युधिष्ठिर, you step forward first. अब पहले किसको बुलाया? युधिष्ठिर को।
Yudhishthir stood on the line, took up the bow and arrow and aimed. अब क्या किया युधिष्ठिर ने? धनुष और बाण लिया और जो उनका एम था उसको उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया. Sir, may I shoot? The Acharya scrutinized the position in which Yudhishthir was standing holding the bow. Yudhishthir, can you see me? Yes, teacher, I see you clearly. Yudhishthir, put down the bow and go back. You can't hit the bird. अब जब उन्होंने कहा कि तुम मुझे देख सकते हो तो उन्होंने कहा हाँ. तो उन्होंने क्या कहा कि युधिष्ठिर, जो तुम्हारे हाथ में धनुष और बाण है उसको नीचे रखो, तुम शूट नहीं कर सकते, तुम बर्ड को हिट नहीं कर पाओगे. Then was Bhimsena turn. He came forward, lifted up the bow and the arrow. अब कौन आए? भीम. Bhima, can you see the visitors on either side? Yes, sir, I can see them all, though not very clearly. Bhima, go back, you can't shoot the bird. अब भीम को भी उन्होंने मना कर दिया. क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हाँ, विजिटर्स को वो देख सकते हैं. Bhimsena was puzzled, but he put down his bow and arrow and returned to his place. अब वो थोड़ा सा puzzled तो हो गए थे, लेकिन वो वापस चले गए. Next, Duryodhana came forward and took up the bow. He aimed at the bird and then turned towards the Acharya. Acharya, may I shoot? Don't. It will be a waste of time. Go back to your place. अब दुर्योधन को भी उन्होंने मना कर दिया. One by one, all the princes came forward and prepared to shoot. The Acharya would ask them a question, listen to the answer and send them back. Everyone was surprised. अब सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि एक के बाद एक आते जा रहे थे शूटिंग के लिए और आचार्य जो है उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे और आंसर सुनने के बाद उनको वापस भेज दे रहे थे. At last, it was Arjuna's turn to aim. He came forward, stood at the line and fixed the arrow to the bow. The Acharya is very strict. He is not satisfied with anyone. Will even a single student be able to please me? अब आचार्य थोड़ा गुस्से में थे, क्योंकि किसी ने भी जो उनका एम था उसको नहीं अचीव किया था. Arjuna, are you ready to shoot? Yes, sir, I am ready. Do you see me? No, sir. अब जब आचार्य ने पूछा कि अर्जुन, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? उन्होंने कहा नहीं. Do you see the tree and the branch on which the bird is placed? अब उन्होंने अर्जुन को पूछा कि जहां पर मैंने बर्ड रखी है, क्या वो पेड़ और ब्रांच तुमको नजर आ रहा है क्या? नो सर. डू यू सी द बर्ड? नो सर. अर्जुना, व्हाट डू यू सी? I see the eye of the bird which has to be shot. Good Arjuna, shoot. अब जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे क्या नजर आ रही है? सिर्फ बर्ड की आंख नजर आ रही. तो उन्होंने कहा गुड, अब उसको शूट करो. Arjuna pulled the string of the bow taut until it
touched. His ear and shot. The arrow flew forward in a straight line without wavering and hit the eye of the bird. Finally, उन्होंने जो है जब धनुष पे अपना बाण साधा और बर्ड की आंख की तरफ उसको छोड़ा तो क्या हुआ? उन्होंने बर्ड की आंख को हिट कर दिया. Wisdom window, moral connect. This story teaches us the importance of focus and concentration. When we pay full attention to our goal, we are more likely to succeed. Arjuna was able to hit the bird's eye because he saw only the target. It shows that hard work and attention help us to our बेस्ट. अगर हमारा हार्ड वर्क है और हम कॉन्सेंट्रेट होकर उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं अपने गोल को, तो हम सक्सेस होते हैं अर्जुन की तरह. Now treasure of terms, learn and grow, concentration, focusing your mind on one thing. Archery, the sport of shooting arrows with a bow. Acharya, a respected teacher or guru. Puzzled, confused or not understanding something. Taut, pulled tight or stretched. Waver, to move or shake slightly. Target, the object you aim at. Scrutinized, looked at very carefully. The learning mirror. Take the correct option. What was placed on the tree as the target? तो क्या रखा गया था? A wooden bird. तो ऐसे ही आपको बाकी के भी कंप्लीट करने हैं. Explain these lines from the lesson with the reference to context. अब आपको जो ये नीचे लाइंस गिवन है, इनको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको एक्सप्लेन करना है. तो इसको आप करेंगे. सेम सेकंड भी आप एक्सप्लेन करेंगे. State true or false. Yudhishthir was the first student to come forward to shoot. True. Fill in the blanks using the words given in the box. आपको बॉक्स में से वर्ड्स चूज करके कंप्लीट करना है. First, Guru Dronacharya placed a wooden bird on the tree to test the archery skill in Arjuna. तो इसी तरह से आपको बाकी के सेंटेंसेस को भी कंप्लीट करना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट. अब टेक्स्ट पर बेस्ड जो ये क्वेश्चंस हैं, आपको इनके आंसर्स टेक्स्ट में से फाइंड आउट करके कंप्लीट करना है. तो इसे आप करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.